जी, तो अब हम आते हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी हमने करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ना वो क्या है, सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन दी ब्लैंक्स हम पढ़ेंगे, जो खाली जगह होंगी उनको हम पुर करेंगे मुनासिब अल्फाज से। फिल इन दी ब्लैंक्स। लिविंग थिंग्स कैन डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स कैन, क्या हो सकता है ये, सोचिए जरा। लिविंग थिंग्स कैन डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकंड बी पार्ट जो है, डैश थिंग्स कैन नॉट ग्रो। देखिए ना, लिविंग थिंग्स दे कैन ग्रो, तो कौन सी चीजें होंगी जो ग्रो नहीं कर सकती? those which are non-living. So non-living things cannot grow. Then is a toy is a dash thing. Toy क्या होता है? Living होता है या non-living होता है? Right. The toy is a non-living thing. Next is plants are also dash things. Plants क्या होते हैं? Living things होते हैं, non-living होते हैं, क्या होते हैं? Plants are living things. Right. Next is living things need air, dash and water. क्या क्या चीजें होती हैं? एयर, वाटर और तीसरी क्या होती है? यस, गुड, फूड. दे लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू सर्वाइव. ठीक हो गया जी? अभी तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया जी, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी. राइट टू लिविंग थिंग्स यू फाइंड एट होम एंड इन क्लास. आपने अभी देखनी है कि नॉन लिविंग थिंग्स आपके घर में कौन कौन सी हैं और क्लासरूम में आपके कौन कौन सी हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एट होम. सोचो जरा कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. जैसे मैंने कहा है कि जी फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग क्या हो सकती है? चेयर. यस, चेयर नॉन लिविंग है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग. सेकेंड इज ए बॉल. आप बॉल से खेलते हैं ना, तो इट्स ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग ना. ये खुद तो ना सांस लेता है, ना नाइदर डज इट ब्रीथ नॉर टेक्स फूड, और नॉट इट कैन नॉट इवन मूव. जब तक आप उसको किक नहीं लगाते इट कैन नॉट मूव. राइट. नॉन लिविंग थिंग्स इन द क्लास. फर्स्ट थिंग व्हाट आई थॉट वाज a door. Yes, classroom has a door. It's a non-living thing. We can a door cannot move till the time we open it ourselves, right? So we have to open and move the door. Second thing is whiteboard. Yes, whiteboard also, it doesn't breathe. It does not require any air, or it does not need any water. राइट. वाटर तो नहीं डालते ना भाई. लिविंग व्हाइट बोर्ड पे वाटर डालेंगे तो विल स्पॉइल इट. राइट. वी शुड नॉट पुट वाटर इन द व्हाइट बोर्ड. राइट L for living things and N for non-living things under the correct coach. ये नीचे you can find a coach. इसमें there are so many things. ये you have to write L for the living things under all on these blank places, and N for non-living things. Right. First thing is there is a boy. Boy is what? Living or non-living? Living के लिए हमने लिखना है L, and non-living के लिए we have to write N. First thing is boy. Boy is a living thing. Yes. Then there is a girl. What is this? It is a living thing. Yes. There is a toy now. A toy bear. What is this? Yes. This is a non-living thing. We write N. This is a ball or umbrella, whatever this thing is. I think it seems to be a ball, so it is a non-living thing. Now there is a cat. Cato hai na, it is moving its feet also, so it is a living thing. And there is a kite. Kite is what? Kite is, yes, it is non-living thing. Okay, and now we have solved 3 questions and going to the 4th question. Fourth question is write the answers of the following questions. Write the answers of the following questions. A part is what do living things need to stay alive? Second is name 5 living things and non-living things found in the park. Name what? 5 living things and non-living things.
found in the park. So we write this, how will we write the answer? First of all, we will take the part A. Question 4, we'll take first of all the part A, which is asking that what do the living things need to stay alive? Living things need air, water and food to stay alive. Good. Okay, na? Living things need air, water and food to stay alive. Right. Next thing was कि जी name 5 living and non-living things found in the park. First of all, we'll see what all living things we find in a park. First thing that we find it normally in the park is children. Second is birds. Third is insects. Fourth is plants. And fifth is cat. So many times you go to a park and find a cat. Cat is also a living thing, na? Children are living thing, birds are living thing, insects are living thing, plants are living thing, and cat also is a living thing. Now we see what are the non-living things that we find in a park. Non-living things. Non-living things. First thing is we find swings. Swings are non-living. Then there is a ball. It's a non-living thing. Then there is a bat. It's also a non-living thing. Then fourth one is lights. Lights are also non-living thing. And the fifth one is poles. There are so many poles you find with which so many things have been tied. So we find swings, ball, bat, lights and poles. These are the examples of the non-living things that normally find in a park. Good, शाबाश. तो हमारी आज exercise we have completed. Okay? इसको you have to write it on the fair copy, right? On your fair notebook you have to write all these things. You have to write complete exercise. You write like this and then you will fill the blanks with these, with the help of this solution that I have given. But you must remember also. It's not only that you write and forget. No, you must remember, okay, what all we read. Okay? Good.